Hello fourth class, get ready for today's SS class. Students, as you know, we are doing block 13 celebrating festivals, and today we will learn about how food and rituals bring us together during festivals. Rituals होते हैं रीति रिवाज. So students, tell me, how do you celebrate the festival? Students, we celebrate festivals with family, friends and neighbors. We greet each other and exchange gifts. We wear new clothes. We clean and decorate our homes, cook special dishes at home. Dear students, our festival foods are those that we have been eating for many years. For example, during Eid, Muslims eat meat and a sweet dish called sevaiya, among other things. We also have other rituals. For example, Christians decorate a Christmas tree on Christmas. Bengalis come together and offer flowers and sweets to the goddess during the Durga Puja. Now students, tell me, who teaches us the rituals? Let's discuss. We learn these rituals from our elders at home. They in turn learned it from those who were older than them. तो उन्होंने अपने एल्डर्स से सीखा है और हमने हमारे एल्डर्स से. हमने रीति रिवाज किन से सीखे हैं? हमारे एल्डर्स से, और हमारे एल्डर्स ने इन रीति रिवाजों को सीखा है उनके एल्डर्स से. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, हाउ डू दोज who have no home, family and money celebrate festivals? How can we help them? Let's discuss. We can give them some money. हम उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, clothes and food, and include them in our celebration so that they can also be part of the festival. By this, we can show that we care for them. ऐसा करके हम ये शो कर सकते हैं कि हम उनके बारे में केयर करते हैं. I hope you understand that. Now, students, please open your content book of SS, Food and Rituals. Let's start reading. We celebrate festivals with our families, friends and neighbors. We clean and decorate our homes, greet each other and exchange gifts. We eat special food. We eat special food and many of us wear new clothes. We also perform special rituals during festivals. Let us read the table to know more about the importance food and rituals of different festivals. So, next step is, many people may not be able to buy new clothes or eat good food during festivals. कुछ लोग होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फेस्टिवल को अच्छे से मना पाएँ. We can help them with money, clothes and food so that they can also celebrate festivals. We can also make sure that we don't harm the environment by setting off firecrackers or throwing festival flowers into the rivers. So हमें environment का भी ध्यान रखना है कि हमें environment को गंदा नहीं करना है, polluted नहीं करना है. I hope lesson is clear to you all. Now students, please open your worksheet. Question number 1 is, name one food item that people eat during these festivals. So Christmas के दौरान people क्या eat करते हैं? During Christmas, people eat cake pudding. So we will write here cake pudding. Cake pudding जो है people eat करते हैं Christmas पे, main food है. ईद पे लोग क्या ईट करते हैं? ईद पे बिरयानी, मीट एंड सेवैया. सो यू कैन राइट वन डिश का नेम यहाँ पे राइट कर सकते हो आप. सेवैया राइट कर सकते हो या फिर मीट या फिर जो भी वो ईट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिवाली. सो दिवाली पे हम ज़्यादातर क्या ईट करते हैं? वेरियस टाइप ऑफ स्वीट्स लाइक गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू एंड ड्राई फ्रूट्स. I hope this question is clear to you all. So you can write in Diwali section any one sweet name or dry fruit. Clear? Next question is question number 2. Describe how you celebrate a festival with your family or friends. Write what food you eat, what you do and what clothes you like to wear. So we celebrate festivals with family, friends and neighbors. We clean and decorate our homes,
cook special dishes at home, wear new clothes, greet each other and exchange gifts. Our festival foods are like we eat sweets, बर्फ़ी and पकोड़ेज़. कुछ लोग होते हैं कि वो लोग पकोड़ा भी ईट करते हैं या फिर कोई अदर स्पेशल डिशेस भी ईट करते हैं. So you will think and write your own answer. Next question is question number 3. Prem does not have a family or a home. प्रेम के पास ना कोई फैमिली है ना कोई होम है. He begs for food and sleeps on the footpath. वो फूड के लिए बैग करता है और फुटपाथ पे स्लीप करता है. How can you help him to celebrate a festival? So we can give him some money, clothes and food and include him in our celebration so that he can also be part of the festival. I hope Akshit is clear to you all. Now students, you have to complete practice question number 6. Your friend wants to know how you celebrate your favorite festival. How will you describe it? आपको describe करना है कि आप अपना favorite festival कैसे celebrate करते हो. And next question is question number 7. Describe the rituals for Guru Parv and Christmas. सो गुरु पर्व के लिए रिचुअल्स क्या होते हैं? पीपल लाइट अप देयर होम्स, विजिट द गुरुद्वारा एंड टेक आउट अ प्रोसेशन एंड दे ईट काढ़ा प्रसाद और लंगर. और ये गुरु पर्व जो है ये क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ द 10 सिख गुरुज. ये सिख गुरु के बर्थडे पे मनाया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज क्रिसमस. क्रिसमस के लिए क्या रिचुअल्स होते हैं? पीपल विश ईच अदर मैरी क्रिसमस, एक्सचेंज गिफ्ट्स, गो टू द चर्च, सिंग क्रिसमस कैरोल्स एंड डेकोरेट क्रिसमस ट्री एट होम. दे ईट केक पडलिंग. एंड क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट का बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए. सो यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 and 7. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.